का है और इट कंटेन्स 17 मेथड। काफी हमें सजेशन आ रहे हैं और उसमें ये बताया गया है कि अभी सर आप जो इंग्लिश मीडियम में जो लेक्चर लेते हो इसमें आप इंग्लिश के साथ में अगर गुजराती यूज करोगे तो हमें बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। इस हिसाब से आज हम लोग दोनों ही लैंग्वेज में ये जो लेक्चर है वो अटेंड करेंगे। तो आया पहली बे मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दो मेथड दी गई है, उसमें से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर એટલે કે फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इसकी जो फॉर्मूला है એનું જે સૂત્ર છે प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ની જે મેથડ છે એટલે કે જે ફોર્મ્યુલા છે એ છે प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। खूब ही इजी मेथड है, इट इज अ वेरी इजी मेथड। ये बहुत ही आसान मेथड है। इसमें सिर्फ क्या करना है कि जो भी आपके पास जो भी रकम आएगी उसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आती है सेकंड मेथड चेन बेस इंडेक्स नंबर એટલે કે ચેન બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર બીજી જે મેથડ છે, બીજી જે પદ્ધતિ છે એની જે ફોર્મ્યુલા છે प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अंदर आपको आगे की प्राइस है कि प्रीवियस ईयर लेना है। इट मींस इसमें प्रीवियस ईयर नहीं, इसमें सिर्फ बेस ईयर ही आता है, इसमें प्रीवियस ईयर आता है। फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। આ બેની વચ્ચે સૂત્રમાં આ માત્ર બેઝ યર વપરાય છે ને પ્રીવિયસ યર વપરાય છે। આ બેઝ આટલો જ ફેરફાર છે, બાકી બેની ફોર્મ્યુલા છે એ એકદમ જ સેમ છે। નોટ બેઝ યર ઇન્ડેક્સ નંબર ઇઝ ઓલવેઝ 100 એટલે કે બેઝ યર ઇન્ડેક્સ નંબર છે એ હંમેશા કેટલો હશે 100 હશે બંને ફોર્મ્યુલાની અંદર। જ્યારે આપણે હમણાં સમ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે તમને સમજાઈશ કે કઈ રીતના તમે ફોર્મ્યુલાની અંદર बेस ईयर इंडेक्स नंबर ची ऑलवेज 100 पे लिखना रखो। इसके बाद हम लोग इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100 किस तरह से होता है। मित्रों आ रीतना लैंग्वेज में હું એટલા માટે લેક્ચર લઉં છું કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે એની ડિમાન્ડ છે કે સર સાથે સાથે તમે ગુજરાતીમાં પણ બોલતા જાઓ। અમુક સ્ટુડન્ટ છે એની ડિમાન્ડ છે કે સર તમે ઇંગ્લિશની સાથે સાથે હિન્દીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ કરતા રહો, જેથી કરીને આ રીતના મારે તમારી સાથે કન્વર્ઝેશન કરવું પડે છે। તો ફરી પાછું એકવાર વાત કરી દો। ઇન્ડેક્સ નંબર ચેપ્ટર છે, ટોટલ 12 માર્ક્સ છે, 17 મેથડ છે। મેથડ નંબર 1 અને 2 ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર અને ચેન બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર આજે આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ। તો આ જે ફોર્મ્યુલા છે એને તમારે યાદ રાખવાની છે અને હવે પછી આપણે આના નેક્સ્ટ सम ની અંદર જઈએ છીએ। We start the first sum of fixed base and chain base method. Exercise 1 में example 1 में for the following data find the index number by fixed base method and by chain base method। और यह आई पास है हमने 2001 એટલે 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 and 2008 and they give price 20 23 28 31 36 40 45 and 50। now this is the sum and we calculate the fixed base and chain base index number। it means કે આ જે છે તમને રકમ આપેલી છે અને ત્યાર પછી આપણે ફિક્સ બેઝ અને ચેન બેઝ મેથડ થી આપણે ઇન્ડેક્સ નંબર જે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે। now fixed base index number fixed base method formula is price of current year upon price of base year multiplied by 100, but we write down the note in 2001 as a base year, so we write down the note। what is the note? base year index number is always 100
So 2001 as a base year. So base year index number is always 100 in both of method. એટલે કે બંને મેથડ ની અંદર બેઝ યર ઇન્ડેક્સ નંબર જે હંમેશા કેટલો હશે 100 હશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વન 23 price of current year 23 and price of base year 2001 is a base year, so its price is 20. So we divide all the prices by way of base year. It means that price of base year it is 20. So 23 price of current year divide price of base year 20 multiply by 100, it means 150. 28 price of current year upon price of base year price is 20. So 28 divided by 20 multiply by 100 is equal to 140. Next way 31 divided by 20 multiply by 100 155, and 36 divided by 20 multiply by 100 it is equal to 180. Price of current year, please show here. Price of current year upon price of base year multiply by 100. It means price of current year 40 divided by price of base year 20 multiply by 100 is equal to 200. 45 divided by 20 multiply by 100 is equal to 225, and 50 divided by 20 multiply by 100 is equal to 250. यहाँ पे हमें जो बेस ईयर प्राइस दी गई है उससे सबको डिवाइड कर देना है और उसको 100 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये आंसर आ जाता है कि आ जवाब अपने अभी जा सकता. दिस इज द आंसर. एंड नाउ वी आर गोइंग इन चेन बेस मेथड. चेन बेस मेथड फॉर्मूला इज प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे चेन बेस मेथड की जो फॉर्मूला है वो है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. ઘણી વાર આયા પ્રીસીડિંગ ઈયર પણ લખ્યું હોય છે, ઘણા પ્રીસીડિંગ ઈયર લખે છે, પ્રીવિયસ ઈયર લોકો કે પ્રીસીડિંગ ઈયર લો, એમાં કઈ ડિફરન્સ પડતો નથી. Now this so base year index number is always 100 in also in chain base method. So 2001 is a base year, so base year index number is always 100, and price of current year 23, price of previous year it is 2001 price is 20 multiply by 100, so 150. Price of current year 28, and price of previous year it means 23. Price of previous year 2003 ની આગળનું કયું વર્ષ છે 2002, એટલે 28 ને કેના વડે ભાગશો આપણે 23 વડે. It means 28 divided by 23 multiply by 100, so answer is 121.7. Now 2004 as a current year and 2003 as a previous year, so 31 divided by 28 multiply by 100, so 110.7. Now 2005 36 and 2004 as a previous year, divided by 31, 36 divided by 31 multiply by 100, 106.1. In the same way 40 divided by 36 multiply by 100, so 111.1. 45 divided by 40 multiply by 100, so 112.5. And now last one is 50 divided by 45 multiply by 100, so 111.1. This is the answer of both method. હવે આ બંને જે મેથડ છે એના જવાબ આવી ગયા છે. ખૂબ જ ઈઝી મેથડ છે. This is the very easy method. काफी इजी मेथड है, और हम लोग अगर एक बार इसे अच्छी तरह से देख ले तो बाद में हमें सेकंड सम में शायद कैलकुलेशन की कोई जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको अपने ओर से आप खुद ही इसको होमवर्क में भी कर पाएंगे. लेक्चर में आपको 2 सम होमवर्क में दिए जाएंगे जो आपको खुद घर पे बैठ के कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करने हैं, और इसको अच्छी तरह से फिक्स बेस और चेन बेस में कैलकुलेट करना होगा. और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है
એટલે કે જો તમને સમજવાની અંદર કોઈ પણ પ્રશ્નો થતો હોય તો तुम गमे ત્યારે મારો कांटेक्ट મારા नंबर पर કરી શકો છો। आप मुझे अपनी ओर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और તમારે આ બે સમ જે છે એ હોમવર્ક માં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय फिक्स्ड डेज मेथड एंड 10 डेज मेथड। ये जो दो सम है वो आपको होमवर्क में अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे ईयर भी दे दिए गए आपको 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। और प्रोडक्शन भी आपको दे दिया गया है 18, 30, 36, 40, 45, 72, 60 एंड 54। नाउ सेकंड सम ईयर ही आपको दे दिया गया है 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 एंड 16। एंड प्राइस भी आपको दे दी गई है 12.5, 15, 18.4, 21, 25, 30.2 एंड 31। ये जो दो सम आपको दे दी गई है वो आपको अच्छी तरह से अपने घर पे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करने हैं। और इसके जो आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कैरी कर लेंगे। तो आप लोग करके अच्छी तरह से ये दो सम कैलकुलेट करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर